Around the world, education is recognized as a fundamental human right. Yet, according to global development reports, millions of children continue to face barriers to consistent and quality learning. Access to education is not only a social concern, it is a cornerstone of sustainable development. It shapes economic opportunity, reduces inequality, and strengthens communities across generations. In India, significant progress has been made in expanding school enrollment. However, access to learning resources, infrastructure, and academic support remains uneven across regions and communities. Even in urban centers such as Chandigarh, where educational institutions are well established, disparities persist at margins, particularly among economically vulnerable households. For some students, the challenge is not willingness to learn, but access to basic study materials and supportive environments. During our field visit under the course Sustainability in Practice, we observed how educational access intersects with sustainability, not only in terms of social equity but also through responsible use and distribution of resources. मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो पढ़ाते हुए मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास बेसिक रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स नहीं है, किताब नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है, इरेजर नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, और वो स्कूल रोज आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं, वहाँ पे टीचर रखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर है कि वो एक छोटी सी एक फंडिंग देती है सर्व शिक्षा अभियान में, उससे उनका काम पूरा हो ही नहीं सकता। तो जब बच्चे के पास लिखने के लिए ये साधन ही नहीं होंगे तो वो एजुकेट कैसे होगा। बस वही मोटिवेशन है कि जिन चीज़ों में हम ऑप्शन ढूंढते हैं, मान लीजिए कि हमने पेन खरीदना है तो हम ये देखते हैं कौन सी कंपनी का खरीदना है, इसकी निब कैसी होनी चाहिए, इसकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ये स्मूथ चलता है नहीं चलता है। वहाँ दम तोड़ देती है चीज़ें। वहाँ सिर्फ ये कंपलसरी है कि पेन होना चाहिए और लिखने के लिए कागज होना चाहिए, ना क्वालिटी कोई मैटर नहीं करता। जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब मैटर करने लग जाती हैं तो फिर आप ये सोचते हो कि हमें इस दिशा में कोई काम करना चाहिए। तो सोसाइटी में ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए जो है हम इसमें काम कर रहे हैं। Organizations like Open Eyes Foundation work within this space, collecting, refurbishing, and redistributing educational materials to bridge gaps that often remains unnoticed. Sustainable change is most visible when it comes to full circle. At Open Eyes Foundation in Chandigarh, we met Mr. Sujal, the operations manager of the organization. His journey reflects the long-term nature of educational impact. तो बचपन से ही एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मेरा बर्थ हुआ था उस टाइम मेरे मॉम एक्सपायर हो गए। तो जैसे ही और मेरी जैसी 5 साल की उम्र हुई उस टाइम डैड एक्सपायर हो गए। तो तब से लेके अब तक मुझे मेरी दादी जी ने पाला। तो पहले जिस टाइम ग्रोइंग फेज था उस टाइम पे बहुत मुश्किल से उन्होंने अलग अलग काम करके, जैसे कभी टी स्टॉल लगा के या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके उन्होंने घर का खर्चा उठाया, मुझे पढ़ाया अच्छे स्कूल में। पहले तो 5वीं तक मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ा। जैसे ही मैं 9th क्लास में हुआ और मैं एक दिन अपने नीचे स्टाफ रूम में जा रहा था तो मैंने देखा ओपन आइज फाउंडेशन की बाहर वैन खड़ी है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि बाहर बहुत सारी बुक्स पड़ी थी। जैसे ही अंदर गया तो फिर उन्होंने मुझे एक बैग दिया। उस बैग के अंदर क्या था, पूरे साल के लिए बुक्स, नोटबुक्स, सारी स्टडी मटेरियल जो होता है वो चीज़ें मुझे मिली। और उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि यार ये मुझे दे रहे हैं कि अब तक मुझे कोई अच्छी बात हुई कि तभी दे रहे हैं। तो उसको मैंने ऐसे देखा कि मैं मतलब मीडिया मुझे तो ये चीज़ मिल गई। मैंने उसको एज ए मोटिवेशन होकर लिया और मैं 10th में भी अच्छे स्कोर करा। उसके बाद 12th में भी मेरे 80% मार्क्स आए। पहले मैं पढ़ने में ऐसा मतलब ओके था, बट उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई मतलब मुझे कुछ दे रहे हैं तो उसमें कोई बात होगी और अच्छे से मुझे गिव अप करना चाहिए।
His experience illustrates how access to educational resources can influence not only individual academic continuity but also future professional pathways. In a broader context, this reflects a sustainable cycle where beneficiaries gradually become contributors within their communities. डायरेक्टली आपका रिस्पॉन्स आप आ भी गए लाइक इतनी जल्दी आई थिंक दैट्स रियली गुड एंड यू नो द कॉज जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हो आई थिंक हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मतलब काश हम लोग उस समय कंट्रीब्यूट कर पाते इट्स लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी कहाँ से सब कुछ आया मतलब हम सारे आफ्टर ऑल है तो मतलब सेम सब कुछ डिजर्व तो हम सारे सेम ही चीज़ कर During our field visit, we observed the realities that often remain outside formal educational statistics. As part of this engagement, our team contributed to the organization's efforts by supporting awareness through social media initiatives, collecting books from donors, and assisting in the distribution of study materials to schools. We also worked on developing a chatbot to help improve communication and accessibility for individuals interested in supporting the foundation activities. These activities provided insight into how community participation and technology can complement grassroots efforts aimed at improving access to education. Education continues to be one of the most important drivers of sustainable development around the world. In India, improving access to learning resources remain an ongoing effort that involves institutions, communities, and local initiatives. Our field visit to Open Eyes Foundation in Chandigarh offered a closer look at how such grassroots efforts operate alongside large educational systems. While challenges remain, initiatives that expand access to learning materials contribute to creating more inclusive opportunities for students. In the long run, sustainable progress begins with ensuring that education remains accessible to all.